Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law Classes. My name is Brijesh, I am the English faculty at Manu Law Classes. In today's session, I am going to discuss 10 words which have been taken from the Hindu newspaper. These words, as always, not only help you in reading comprehension but also help you in questions that are based upon synonyms, antonyms and other one-word questions. So let us start. The first word in the list is abundant. Abundant means something which is in plenty. कोई चीज जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो. An ample amount, right? Since the orange crops were abundant this year, orange prices are most affordable. तो कोई भी चीज जो ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाती है तो उसके प्राइसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं. So plentiful, ample and profuse. So I'm sweating profusely means बहुत ही ज्यादा. Right, the next word in the list is applaud. This is very common word that was there in the newspaper. Applaud means ताली बजाना, किसी का स्वागत करना. To congratulate by clapping. The audience applauded by standing up at the end and cheering. So clap, cheer and praise. This is quite easy word. The next word in the list is exonerate. Exonerate का मतलब क्या होता है? This is very common word in a newspaper because a lawyer's duty is to exonerate his client from all the charges. So to prove that someone is not guilty of a crime or responsible for a problem, bad situation, etc. So the job of the defense attorney is to exonerate his clients and keep them out of the jail. So as a lawyer, यही काम होता है हमारा. Absolve, acquit and release. Release are some synonyms of this word exonerate. So do make a mark of this word. This is important word. नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज मेरिटोरियस. मेरिटोरियस मतलब मेधावी, ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन जो बहुत ही मेहनती है और अच्छे नंबर से पास हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है. सो डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज, उसे सम्मान मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड मेरिटोरियस, राइट? मेरिट जिसने लाया. सो दो ही हैड नॉट वॉन फर्स्ट प्लेस, ही फेल्ट हिज एफर्ट्स वर स्टिल मेरिटोरियस, राइट? अगर वैकेंसी कम है और एफर्ट ज्यादा लगाए हैं, बहुत सारे क्लैट के बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने बहुत रात दिन मेहनत किया है और उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट ड्यू टू सम कट ऑफ एंड अदर थिंग्स उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट स्टिल दे आर मेरिटोरियस, राइट? सो एडमायरेबल, excellent, praiseworthy are some synonyms of this word meritorious. Next word in the list is reproach. Reproach is the expression of disapproval or disappointment. For example, you have nothing to reproach yourself for, it wasn't your fault. So sometimes क्या होता है, हम अपने आप को पनिश करते हैं, अपने आप को ही अप्रूव नहीं करते हैं. So that is reproach. So rebuke means डांटना, scolding and admonition. तीनों का ही मतलब होता है डांटना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपको खुद को अब रिप्रोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं थी, राइट? सो रिप्रोच मींस द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं से निराश होना, राइट? द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज रेटिसेंस. रेटिसेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव. सो रेटिसेंस वो होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलना चाहते, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. द डिटेक्टिव ट्राइड टू पुश द सस्पेक्ट पास्ट हिज रेटिसेंस and get him to break his silence in the interrogation room. So होता है ना, कुछ लोग रिजर्व है, वो बात नहीं करना चाहते. So reticence is a reserved one, reserved, shyness or restraints, who are not willing to speak up. Next word in the list is rush. Rush is a plotting, right? कोई ट्रिक करना, कोई प्लॉटिंग करना. A plan or plot to mislead someone. क्यों प्लॉटिंग करते हैं? ताकि किसी को धोखा दे सके. So many home invaders gain access to homes by using the excuse of a lost child एज अ रूस, राइट? एक बहाना बना के ट्रिक करते हैं ताकि लोगों को धोखा दे सके. सो प्लॉय, टैक्टिक एंड ट्रिक आर सम सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड रूस. नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज प्रीम्प्ट. प्रीम्प्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट कर देना पहले ही होने से. टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कोई चीज को होने से रोका जा सके. सो टू प्रीम्प्ट मोर इमिग्रेंट्स, बहुत सारे इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, फ्रॉम क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, द पुलिस, मोर पुलिस ऑफिसर्स वर हायर्ड. सो फोरटेल मतलब पहले से ही बता देना, प्रिवेंट रोकना एंड सिक्योर. these are synonymous to the word preempt. Next word in the list is rancor. Rancor is a feeling of hate and continuing anger about something in the past. तो बहुत ही मन में कूटते रहना, गुस्से में रहना, नफरत की भावना रखना, दैट इज रैनकोर. सो ही स्पोक विदाउट रैनकोर. तो कोई व्यक्ति है जिसने बिना किसी नफरत की या पुरानी बातों को भूल के बातें करी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रैनकोर. सो बिटरनेस मींस कड़वाहट, इलविल बुरी इच्छा, एंड विट्रियोलिक. सो विट्रियोल इज अ कड़वाहट एंड विट्रियोलिक मतलब कड़वाहट से भरा हुआ पर्सन, राइट?
नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज रिक्लूज. रिक्लूज मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को सोसाइटी से दूर कर लिया है, एक तरह से सन्यासी हो चुका है. सो रिक्लूज इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो अकेले रहना पसंद करता है, दूसरों से मिलना नहीं चाहता. सो डिस्पाइट हर रेपुटेशन एज अ रिक्लूज, तो कोई व्यक्ति है जिनका खुद का एक रेपुटेशन बना है कि ये साध्वी जीवन जी रही है. he held regular gatherings in his home to entertain close friends. तो वो व्यक्ति जो है वो अपने घरों में पार्टी रख रहे हैं ताकि लोग ये समझे कि ये रिक्लूज नहीं है, राइट. सो हर्मिट, ascetic and recluse are the synonym of this word recluse. So एक व्यक्ति जिसने सन्यासी जीवन को चुना हुआ है या दूर रहना चाहता है, that is recluse. So I hope you have understood all the words discussed in this video. Follow for more words, and you have a playlist of vocabulary. So as soon as the exam is approaching, make sure that you're revising them one by one and noting them somewhere so that you can memorize them. All the very best for your upcoming examination. Thank you.